Welcome back, students of class 7. I will continue chapter number 2. Today's my topic is operating systems and functions of operating system, which is on page number 23. Now I will tell you about operating system. Short form we can say OS. O means operating, S means system. Operating system is also a system software. It is the main software of the computer. It is used to monitor and control all the activities and operations of the computer. Operating system is also used to organize all the data of the computer. It is used to run and other applications. In other words, we can say operating system provide links between user and computer. It is initially loaded into the computer by a boot program. It manages all the other programs in a computer. Examples of operating systems are Windows, which you are using in your computer, DOS, Unix, Linux or Mac. These all are few examples of operating system. Now I will explain you functions of the operating system. The operating system perform the following main function. Number 1, booting. Number 2, user interface. Number 3, configuration of devices and software. Number 4, management of program. Number 5, managing files. Number 6, memory management. Number 7, scheduling job. Number 8, task management. Number 1, function of operating system is booting. What is booting? Booting, the process to start or restart the computer is called booting process. Means when you switch on the computer, electronic signals make active the processor chip. और फिर क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड होना शुरू हो जाती हैं. आप देखते होंगे इंस्ट्रक्शंस आती हैं. इंस्ट्रक्शंस आने के बाद आपका डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर अपेयर होता है. देन आइकन्स अपेयर होते हैं एंड pointer appear on the screen. Then your computer ready to work. So we can say your computer is booting. There are two types of booting, cold boot and warm boot. What is cold boot? When the computer is switched on, the processing of starting, it is called cold boot. इट मीन्स कि जब आप कंप्यूटर का पावर ऑन करते हो और आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? कोल्ड boot. Now what is warm boot? The process to restart a computer that is already powered on, it is called warm boot. Means व्हाट इज़ वार्म बूट? चलते हुए कंप्यूटर को जब आप रीस्टार्ट करोगे तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? वार्म बूट. यूज़र इंटरफेस मीन्स हाउ द यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर टू परफॉर्म वेरियस टास्क. यूज़र, हु आर द यूज़र? जो कंप्यूटर यूज़ करता है वो यूज़र. मीन्स वी आर द यूज़र. इन यूज़र इंटरफेस हम कंप्यूटर से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं. एंड वाई वी कम्युनिकेट इन टू द कंप्यूटर? टू परफॉर्म वेरियस टास्क. अब कौन कौन से टास्क जो हैं वो हम कंप्यूटर में परफॉर्म करते हैं? यूज़र रन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम. ठीक है ना, हम क्या करते हैं कंप्यूटर में? एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करते हैं. ओपन द डॉक्यूमेंट्स, वी एंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर, वी प्रिंट्स द आउटपुट. दीज टास्क वी परफॉर्म इन द कंप्यूटर. सो इन सारे काम्स को कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी डिवाइसेस यूज़ करता है? कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आर यूज फॉर इंटरफेसिंग.
There are two types of user interface, command line interface and number 2 is graphical user interface. Now what is command line interface? In command line user interface, the operating system provides a prompt line on the computer screen. This is the picture of command line interface. This interface is difficult to use. Why this interface is difficult? Because in this interface we type commands manually through keyboard to perform a specific टास्क. इसके अंदर कोई ग्राफिक्स नहीं होती, कोई पिक्चर नहीं होती, कोई आइकन्स नहीं होते. That's why command line interface is difficult to work. And in the operating system DOS is an example of a command line interface. What is graphical user interface? It is also called GUI or desktop environment. This interface is look like this. This is our Windows 7, Windows 10, Windows 8, 8.1 which we are using. So this interface is called graphical user interface or desktop environment. In graphical user interface, the operating system provides graphical images on the computer screen which are known as icons or command buttons and represent objects. In graphical user interface में आपको icons screen के ऊपर नज़र आते हैं, graphical pictures you can see. It is easy to use. That's why we are using graphical user interface, because in this environment we work with the help of mouse and इसमें graphics होती है, icons होते हैं, pictures होते हैं, so you work easily. In this environment, application programs, commands, disk drives, files are provided in the form of icons. The user clicks the icon to open the document and document will be open. The graphical user interface is very easy to interact with the computer. The Microsoft Windows operating system is an example of GUI. Third function of operating system is configuration of devices and software. So first of all, I will tell you what is configuration means. Configuration means the relationship of hardware element to each other. Windows configure both the software and hardware. It means देखें आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर both are work to perform a task in computer. तो इन दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कम्युनिकेशन मीन्स उसे कॉन्फ़िगर कौन करता है, उनके बीच में राब्ता कौन प्रोवाइड करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. सो वी कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू कॉन्फ़िगर ऑफ ऑल डिवाइसेस विच आर अटैच्ड एंड ऑल सॉफ्टवेयर विच आर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर. Fourth function of operating system is management of programs. The operating system also provides the interface between programs and the user. The main services that an operating system provides for the programs are means आप क्या करते हो किसी भी प्रोग्राम में. Number 1, saving the data from memory in file on the disk. ठीक है, मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपके जो है क्या करता है कि डेटा को सेव करने में आपकी हेल्प करता है. लोडिंग द फाइल्स फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, फाइल्स को मेमोरी में हेल्प करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है. सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंटर, द कॉपी और मूव डाटा फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू अनदर, द सर्विसेज ऑफ हार्डवेयर टू प्रिपेयर द डिस्क टू स्टोर डाटा. Fifth function is managing files. In managing files, operating system also helps the computer to manage all the files. You have many folders and files in your computer. The operating system helps to manage all files or folder. For example, operating system also helps to create your file and folder. It is used to save, copy and delete your file and folder.
Operating system also help to cut your file. It's help to paste your file one place to another. Operating system helps the computer to rename a file. So we can say operating system also helps in file management. 8 functions of operating system discussed in your book, but I have explained you only 5 functions of operating system. If I'll explain all, so it will be very complicated for you. Okay, Allah Hafiz. Thank you. I will define you how to write its question and answers in my next video.